Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So आज वीडियो रे SSB PGT English रो 2024 रो क्वेश्चन रा डिस्कशन करिया. First question होची the play Gorboduc, Ferex and Porrex tragedy has 5 acts. The first 3 acts of it were written by Thomas Norton, who had written the last 2 acts. Gorboduc English literature of first tragedy थिला जाको दी जन राइटर लिखथिले जने थॉमस नॉर्टन आउ जने थिले ऑप्शन बी थॉमस सैकविल इज द करेक्ट आंसर. Then question number 2, which of the university which was not a university graduate? किए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट नथिले? ऑप्शन डी थॉमस किड इज द करेक्ट आंसर. याको मन रखि परिबे जैसे किड थिले सेते यूनिवर्सिटी जाय नथिले ए भला मन रखि परिबे. क्वेश्चन नंबर 3 होची which among the following in Dr. Faustus is not among the 7 deadly sins? कोटा 7 deadly sins रा आसु नहीं. That is option number D, hatred is the correct answer. Question number 4, who is called average slave by Miranda in The Tempest? The Tempest विलियम शेक्सपियर को लास्ट प्ले थिला बा स्वान सॉन्ग भी कहा जाए लास्ट प्ले को. सेतिरे मिरांडा काहा को एवरेज स्लेव बोली कहिछि. जेटा होछि ऑप्शन नंबर बी कालीबान इज द करेक्ट आंसर. Which Shakespearean tragic heroine was strangled by her husband? तो को शेक्सपियरियन हीरोइन जहाँ को किता हस्बैंड स्ट्रांगल करिके बा तंटी चिपिके मार देथिला सेटा होचे ऑप्शन नंबर सी डेस्टिमोना. आ प्लेटा थिला ओथेलो आ डेस्टिमोनार हस्बैंड भी ओथेलो थिला. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? तो करेक्ट सीक्वेंस इज ऑप्शन नंबर ए जैकोबियन एज, देन कैरोलिन एज, तापर कॉमनवेल्थ पीरियड, रेस्टोरेशन एज, देन ऑगस्टाइन एज. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7, if music be the food of love, play on. It is the first line of Shakespearean comedy identified. तो एटा को कॉमेडी रो ओपनिंग लाइन व फर्स्ट लाइन थिला सेटा होचे ऑप्शन नंबर सी 12th नाइट इज द करेक्ट आंसर. Question number 8, the most heterogeneous ideas are yoked by violence together is a quote that describes the style of metaphysical poetry. Who is credited with saying this about metaphysical poetry? तो ये कोटेशन टा metaphysical poetry ऊपर किए देथिले सेटा होचे ऑप्शन नंबर बी सैमुअल जॉनसन इज द करेक्ट आंसर. फॉर गॉड्स सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव. एटा जॉन डन करो द कैनोनाइजेशन पोएम रो लाइन थिला. फॉर गॉड्स सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटाफिजिकल पोएट? तो किए नथिले पचारछि सेटा होचे ऑप्शन नंबर डी थॉमस कैरियू इज द करेक्ट आंसर. से मेटाफिजिकल पोएट नथिले. Question number 11, which of the following is not a popular form of comedy during the Restoration era? सेटा होचे ऑप्शन नंबर ए रोमांटिक कॉमेडी. Which author work combination is incorrect? कोटा इनकरेक्ट अछि. ऑप्शन नंबर ए जॉन ड्राइडेन द राइवल्स सेटा भूल अछि तेणु ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Question number 13, the heroic tragedy in Restoration period is characterized by larger then life heroes, sensationalistic location, sensationalistic action often played out in exotic locales, highly stylized poetic dialogues and idealized heroines. Option B is the correct answer. What is the subtitle of All for Love by John Dryden? तो All for Love रो subtitle कौन थिला? Option number D, The World Well Lost is the correct answer. Question number 15, those rules of all discovered not devised are nature still but nature methodized. Which neoclassical writer wrote these lines? Option A Alexander Pope is the correct answer. Question number 16, who wrote Absalom and Achitophel, a satirical poem that reflects political events of the time? Option C John Dryden is the correct answer. Thy hand, great anarch, let the cotton fall, and universal darkness buries all. This is the concluding couplet of Alexander Pope's work. Identify the text. तो को टेक्स्ट रो एटा concluding line थिला written by Alexander Pope सेटा होची ऑप्शन नंबर सी द डनसियाड पोएम रो. Question number 18, secure whatever he gives the best. This is the poet's message to men who are wrecked by their wishes for gain and grandeur, so as to accept what God has ordained for him. Identify the poem in which this line occurs. एटा होची ऑप्शन नंबर बी vanity of human wishes रे लाइन उडा अछि.
Question number 19. Who is called the father of the English novel because he was the first to give genuine pictures of men and women of his age without moralizing over their vices and virtues? So option number D, Henry Fielding is called the father of English novel. Question number 20. The four wheels of English novel comprise Samuel Richardson, Henry Fielding, Tobias Smollett and option A, Lawrence Sterne. ये चार जन को द फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल बोली कहुए. क्वेश्चन नंबर 21. हु इज द ऑथर ऑफ पमेला वर्च्यू रिवार्डेड एन एपिस्टोलरी नॉवेल? सो पमेला एपिस्टोलरी नॉवेल, एपिस्टोलरी हूँ जो नॉवेलटा लेटर फॉर्म रे लिखाई थाए तो तार ऑथर किए? ऑप्शन नंबर डी, सैमुअल रिचार्डसन इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 22. गलिवर्स लास्ट भोएज वाज टू. लास्ट भोएज से चार्टा भोएज करते लास्ट भोएजटा कौटी थी? सी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Question number 23. Our birth is but a sleep and a forgetting. In which poem of William Wordsworth does this line occur? William Wordsworth को पोएम रे लाइन गुड़ा देखिए को मिले सेटा होची ऑप्शन नंबर बी, इमॉर्टैलिटी ऑड. Question number 24. What is the central theme of the rhyme of the ancient mariner? The rhyme of the ancient mariner central theme कौन पचरची सेटा होची ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी, the sin, suffering and expiation of the ancient mariner सेटा होची तारो थीम. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Question number 25. With which of the following is the nightingale in Ode to a Nightingale identified? सेटा होची ऑप्शन नंबर डी, a draught of vintage बोली कहुए. Question number 26. Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. In which poem does this line occur? तो को पोएम रे लाइन देखिए को मिले हाँ सेटा होची ऑप्शन नंबर ए, टू ए स्काईलार्क. क्वेश्चन नंबर 27. Which romantic poet was last to take birth and first to die? तो को रोमांटिक पोएट जे सबुठ आगे जन्म ही पोएट वाज लास्ट टू बर्थ एंड फास्ट टू डाई जे सबुठ लेट्रे जन्म होगी कि सबुठ जल्दी मर जाइए से होती ऑप्शन नंबर बी, जॉन किट्स. Question number 28. Which romantic poet has asserted that poets are the unacknowledged legislatures of the world बोली किए कही? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. पी.बी. शेली और पर्सी बैसी शेली. Question number 29. Who is the protagonist of Charles Dickens' Great Expectations? तो protagonist किए? ऑप्शन नंबर बी, फिलिप पिरिप इज द protagonist of Charles Dickens Great Expectations जार निकनेम पिप थिला. Question number 30. Sophocles long ago heard it on the Aegean and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery. In which poem of Matthew Arnold do these lines occur? सेटा होची ऑप्शन नंबर डी, डवर बीच इज द करेक्ट आंसर. Question number 31. The theory of evolution made Europe's middle class doubt the biblical teachings that the universe was created in 7 days. Who propounded this theory? The theory of evolution कहार थिला सेटा थिला ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन. I cannot rest from travel. I will drink life to the less. In which Victorian poem do these lines occur? तो को Victorian poem रे लाइन गुड़ा देखिए को मिले ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यूलिसेस. क्वेश्चन नंबर 33. Which of the following character novel combination is not does not match कोड़ा मैच करू नहीं पचारची सेटा होची ऑप्शन नंबर डी, कैथरीन ऑर्नसो जूड द ऑब्सक्योर. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. Which novel of R.L. Stevenson deals with the disintegrated self? Disintegrated self सहित को नोवेलटा डील करुची रिटन बाय R.L. Stevenson सेटा होची ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकेल एंड मिस्टर हाइड. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 35. Which is the subtitle of Elizabeth Gaskell's Mary Batten? Mary Batten रो सबटाइटल कौन थिला? A Tale of Manchester Life. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Which novel has the subtitle A Novel Without a Hero? को नोवेल रो एटा सबटाइटल थिला ए नोवेल विदाउट ए हीरो सेटा होची ऑप्शन नंबर डी, वैनिटी फेयर. I am not an angel
and I will not be one till I die. I will be myself. Which female protagonist says it? तो को female protagonist ये लाइन टा कहते से हूँ ऑप्शन नंबर बी जेन आयर इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 38 दत्ता दयाधाम दम्यता शांति 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 दिज क्लोजिंग लाइन्स ऑफ टी एस इलियट्स द वेस्टलैंड रेफर्स टू. तो कौ उपनिषद को रेफर कर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. Question number 39. How many swans are mentioned in Yeats? The wild swans are cool. The wild swans are cool रे केतेडा स्वान कथा कहा जाइछि तार नंबर होछि ऑप्शन नंबर सी 59 is the correct answer. Then question number 40. What disease did Oswald inherit from his father in the Ghost? तो को डिजीज Oswald तांको फादर पाखरु इनहेरिट करथिले द घोस्ट रे सेटा होछि सिफिलिस. Option number A is the correct answer. Question number 41. Time present and time past are both perhaps present in time future and time future contained in time past. These are the opening lines of option number C 4 quartets रे opening line. Question number 42. Will no one rid me of this turbulent priest? It is said that these words set in motion the events that led to Thomas Becket's death. Who said it? तो ये लाइन गुड़ा किए कहिथिले ऑप्शन नंबर बी किंग हेनरी सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 43. वेटिंग फॉर गॉड opens with nothing to be done who is the speaker. सो वेटिंग फॉर गॉडर जो ओपनिंग लाइन थिला nothing to be done से तार स्पीकर किए थिले भाई लाइन टा किए कहिथिले ऑप्शन नंबर डी एस्ट्रागन इज द करेक्ट आंसर. एस्ट्रागन कहिथिले. क्वेश्चन नंबर 44. इन व्हिच पोएम ऑफ W.B. Yeats द फ्यूचर रुइन ऑफ ट्रॉय एंड द मर्डर ऑफ एगमेम्नन आर रेफर्ड टू. को पोएम रे रुइन ऑफ ट्रॉय एंड द मर्डर ऑफ एगमेम्नन को रेफर करा जायछि सेटा होछि ऑप्शन नंबर डी लेडा एंड द स्वान. क्वेश्चन नंबर 45. अर्थ रिसीव एन ऑनर्ड गेस्ट विलियम येट्स इज लेड टू रेस्ट. These lines occur in memory of W.B. Yeats. Identify its poet. तो यार राइटर किए थे यार पोएट किए थे इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats जो पोएम थिला तार पोएट किए थे पचार ऑप्शन नंबर बी W.H. Auden इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 46. In 6 characters in search of an author, the 6 characters are. So the book in 6 characters in search of an author book रे जो 6 जन कैरेक्टर थिले से माने किए थिले द फादर द मदर द सन द बॉय द सिस्टर एंड आउ जने थिले द स्टेप डॉटर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर द स्टेप डॉटर. क्वेश्चन नंबर 47. इन द बिगिनिंग ऑफ ए फेयरवेल टू आर्म्स देयर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए बैटल. को बैटल रो डिस्क्रिप्शन हिची सेटा होची ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर द बैटल ऑफ Caporetto. Question number 48. Which of the following novels does not employ stream of consciousness technique? से कहिछि को नोवेलटी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को फॉलो करू नहीं सेटा होछि ऑप्शन नंबर बी ब्रेव न्यू वर्ल्ड. बाकी तीनटा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक रे लिखा है. देन क्वेश्चन नंबर 49. हु वाज द लोन सर्वाइवर इन राइनोसोरस बाय यूजेन आयोनेस्को. राइनोसोरस रे द लोन सर्वाइवर किए थिले. ऑप्शन नंबर सी बेरेंजर इज द करेक्ट आंसर. ही वाज द लोन सर्वाइवर इन राइनोसोरस. देन क्वेश्चन नंबर 50. हाउ मेनी ऑफ मदर करेज चिल्ड्रेन सर्वाइव द वार इन मदर करेज एंड हर चिल्ड्रेन. सो मदर करेज एंड हर चिल्ड्रेन रे मदर करेज रो केते जण पिला सर्वाइव करथिले वार रे सेटा होछि ऑप्शन नंबर डी नन बा केही भी सर्वाइव करि नथिले. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. सो एथला 50 क्वेश्चंस. नेक्स्ट वीडियो रे आउ 50 क्वेश्चंस डिस्कशन करिया. थैंक्स फॉर वाचिंग.